हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मणियार और हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ इनकम पढ़ा। उसमें मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल तो पहले ही पढ़ा दिया था, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मैंने पढ़ाया था आपको। प्लस अपन ने स्कोप ऑफ इनकम पढ़ा था, उसमें सेक्शन 7, 8, 9 पढ़ा था अपन ने। फिर अपन ने सम्स किए थे रेजिडेंशियल स्टेटस के, करेक्ट। अच्छा, अभी रेजिडेंशियल स्टेटस में जो पहला सम था मैंने सबको लिखवाया था और मैंने आपको बताया था इन लोगों ने क्या क्या गलती की है। कहाँ पे इंडिविजुअल लिखना चाहिए, पर्सन लिखा, कहीं पे प्रीसीडिंग नहीं लिखा, कहीं पे लास्ट ईयर, कुछ तो नया 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 लिखा था। इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जो आगे के सम्स है उनकी पूरी थियरी लिख के लेके आनी है। होपफुली आप लिख के लेके आए हो, रिकॉर्डेड वाले, लाइव वाले भी। हाँ विनय, थियरी लिखी पूरी? हाँ, एक बार नहीं, मैंने सब सम्स की बोली थी। जरा मैं चेक कर लेता हूँ। जो नहीं लिख के लाया क्लास के बाहर, आज आज तो बिठाने वाला ही नहीं हूं मैं। ये आप लोगों ने क्वेश्चन 2 की थियरी लिखी, क्वेश्चन 3 की, 5, 6, 8 इसने तो लिखी है भाई, आपकी देखिए। तो फिर आप बाहर जाइए और लिख के लाइए पूरी, जैसे बोली थी मैंने कल ही बोल दिया था, जो लिख के नहीं लाएगा मैं लेक्चर नहीं बिठाऊंगा। क्योंकि क्या है, ऐसे थोड़ा करूंगा नहीं जब तक आप सुधरोगे नहीं। 2, 3, 5, 6 और 8 बरोबर। आपने पेजेस बरोबर छोड़े। मैंने 6 के बाद एक पेज बोला था, जो बोला है मैंने, इसलिए फोटो लेने को बोला था। इसको लाइब्रेरी में बिठाओ, लाइब्रेरी से ही लिख के लाएगा सब, जब तक मैं आगे के सम करवाते जाऊं। विनय, चलो क्वेश्चन 1 तो अपन ने कल किया था, क्वेश्चन 2 पे आए अपन। क्वेश्चन 2 में देखो क्या दिया है अपने को। X, an Indian citizen who is appointed as senior taxation officer by government of Nigeria। नाइजीरिया कहाँ पर है? इंडिया में क्या? कहाँ पर है? इंडिया के बाहर, मतलब वो इंडिया के बाहर रह रहा है। फॉर फर्स्ट टाइम ऑन September 20th, 2022 फॉर ज्वाइनिंग हिज ड्यूटीज इन नाइजीरिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 ही कम्स टू इंडिया फॉर 176 days। अब ये इंडिया के बाहर रह रहा है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया विजिट के लिए आता है। ही फॉल्स इन एक्सेप्शन, करेक्ट। सिंस ही फॉल्स इन एक्सेप्शन 2, मतलब उसके लिए बेसिक कंडीशन 2 एप्लीकेबल। खाली कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल है? 1। अगर 1 वाली कंडीशन फुलफिल की तो ही वो रेजिडेंट होगा, पर 1 उसने फुलफिल नहीं की है, बरोबर। तो अभी अपना आंसर्स दिखाइए, आप लिख के लाए हैं कि नहीं लाए हैं। अगर नहीं लिख के लाए हैं तो यू नीड टू गो आउट, आई कांट हेल्प। जल्दी जल्दी। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 5, 6 और 8। टू, फिर ये 3, फिर 5, 6 अधूरा है। बाहर जाइए, कंप्लीट करके आइए जितना बाकी है। विनय आपका इंतजार कर रहा है लाइब्रेरी में। वॉलेट बाहर है, लिख के ही आना है अंदर। मैंने कल ही बोल दिया था, बिना लिखे अंदर नहीं लूंगा मैं। नो नो, नो आर्ग्यूमेंट्स।
चलिए गाइस, क्वेश्चन 2 का आंसर लिखिए. जाइए, विनय रुका है आपके लिए वहां पे. मैंने कल ही बोला था नहीं लिखेंगे, मैं नहीं बिठाऊंगा. तो अपना किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं. नो पार्शियलिटी. लिखो सेकंड वाले का पैराग्राफ लिखा है ना आपने. लिखो, इन गिवन केस मिस्टर एक्स. क्वेश्चन 2 के नीचे. हाँ, इन गिवन केस मिस्टर एक्स is an Indian citizen. Mr. X is an Indian citizen who stays outside India, who stays outside India, who stays outside India, and and during previous year, and during previous year comes for a visit, and during previous year comes for a visit. Therefore, basic condition 2, therefore basic condition 2, therefore basic condition 2 is not applicable, is not applicable. Basic condition 2 is not applicable to Mr. X, to Mr. X, and he needs to stay for 182 days to become a resident. He needs to stay for 182 days to become resident. Full stop. During previous year, Mr. X stays for 176 days. Mr. X stays for 176 days, and so is non-resident, and so is non-resident, and so is non-resident during previous year, 2023-24. Full stop. Since X is non-resident, question of. Since X is non-resident, question of ordinary and not ordinary does not arise. Question of ordinary and not ordinary does not arise. बरोबर. Paragraph change. Paragraph change. If suppose income of Mr. X exceeds rupees 15 lakhs, exceeds rupees 15 lakhs, income of Mr. X from sources other than foreign sources. ऐसा लिखो. Income of Mr. X from sources other than foreign sources. From sources other than foreign sources. Exceed rupees 15 lakh.
exceed rupees 15 lakhs. Then he can be regarded as residence. He can be regarded as resident, as his stay during previous year, as his stay during previous year exceed 120 days, as his stay during previous year, as his stay during previous year exceed 120 days, and during 4 previous year preceding relevant previous year. एक्सीड बोला तो मोर ही हो गया ना, एक्सीड 120 डेज ना, 176 डेज रहा है तो 120 से ज्यादा ही हो गया ना. And his stay during 4 previous year immediately preceding relevant previous year, immediately preceding relevant previous year exceed 365 days. बरोबर. Therefore, in such case, Mr. X will become, therefore, in such case, Mr. X will become resident and not ordinarily resident. 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 बरोबर. अच्छा, इसके बाद ये समझा सबको. क्वेश्चन 3, अमृतलाल, an individual, on individual नहीं, an individual, a resident of Amritsar, left India for England for higher studies on August 120. During winter vacation, he came to India twice, once on 1st November 21, again on 1st November 22, and stays in India till the end of financial year. During the year ended 31st March 2024, he did not come to India at all. Determine his residential status. जब एक भी दिन नहीं आया तो रेजिडेंट हो ही नहीं सकता है. तो लिखो उसके नीचे जो आपने थियरी लिखा है ना, थियरी के नीचे स्मॉल ए लिखो, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायर्ड पार्ट क्या है हमारा, स्मॉल ए है ना. ये देखो फर्स्ट रिक्वायर्ड पार्ट क्या है हमारा, स्मॉल ए है ना. तो लिखो ए. जो थियरी लिखा है उसके नीचे, क्वेश्चन 3 की थियरी लिखी है ना, उसके नीचे स्मॉल ए. आया ही नहीं तो रेजिडेंट कैसे होगा. वैसे तो इसको एक ही एप्लीकेबल है, बाहर रह रहा है और इंडिया विजिट के लिए आता है तो. पर ये तो एक ही दिन भी नहीं आया ना, तो एक ही दिन नहीं आया तो कैसे रेजिडेंट होगा. लिखो ए, लिखो ए. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2023-24, during previous year 2023-24, X did not come for even single day, for even single day, and so is non-resident during previous year, and so is non-resident during previous year 2023-24, during previous year 2023-24, assessment year 24-25, assessment year 24-25. बरोबर.
अभी बी लिखो, बी सेकेंड रिक्वायर्ड पार्ट बी है ना. इफ देखो क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन में, इफ ही हैड बीन इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ऑन अ विजिट say for 160 days then determine his residential status. 160 days है, वो इनकम एक्सीड हुई तो, पर ये तो पढ़ने गया है तो कमा तो नहीं रहा है, बरोबर. तो लिखो बी, लिखो बी. मिस्टर एक्स स्टेज आउटसाइड इंडिया एंड comes to India for a visit and comes to India for a visit comes to India for a visit of 160 days. Full stop. Mr. X falls in exception 2. Mr. X falls in exception 2. Mr. X falls in exception 2. And so, basic condition 2 is not applicable. And so, basic condition 2 is not applicable to Mr. X. To Mr. X. Full stop. For becoming resident, अरे रुको तो सही, मुझे लिखवाने तो दो. For becoming resident, Mr. X has to stay in India. Mr. X has to stay in India for 182 days or more. For 182 days or more. Full stop. Since his stay is less than 182 days, since his stay is less than 182 days, he is regarded as non-resident. He is regarded as non-resident. Full stop. Since he is non-resident, since he is non-resident, since he is non-resident, question of ordinary and not ordinary does not arise. Question of ordinary and not ordinary does not arise. Question of ordinary and not ordinary does not arise. Correct? Paragraph change. If total income of Mr. X, if total income of Mr. X exceed rupees 15 lakhs, exceed rupees 15 lakh during previous year from sources other than foreign sources, from sources other than foreign sources, then Mr. X can be regarded as resident. Then Mr. X can be regarded as his stay. As his stay. ये कभी छोड़ के गया? 1 अगस्त 20 को ना? तो जरा देखिए, देखो 1 अगस्त 20 को छोड़ के गया, मतलब प्रीवियस ईयर 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, ये हमारा प्रीवियस ईयर है. इसमें 160 दिन है. इसके पहले कौन से साल में आया था वो? 1 नवंबर 21 और 1 नवंबर 22 को. 1 नवंबर 21 को आया था,
तो नवंबर से लेके 31 मार्च, तो कितने दिन हो गए? 30, 31, 31, 28, 31, बरोबर। फिर सेम यहाँ पर भी आया था 151 डेज, 151 डेज। छोड़ के कभी गया था? 1 अगस्त 20 को। तो 1 अगस्त 20 के पहले तो था ना 30 अप्रैल के, 31 मई के, 30 जून के, 31 जुलाई के और 1 अगस्त का 123। 1 अगस्त को गया तो जिस दिन जाता है जिस दिन आता है दोनों दिन लिखते हैं, मैंने बोला था आपको। 123 तो देखो हो गए 365 के ऊपर। और इसके पहले वाले साल में तो है ही ना वो पूरा दिन, 1920 में तो पूरा है ही ना वो। इसके पहले 1920 है, 1920 में तो 365 डेज इधर ही है वो, करेक्ट। तो पीछे के 4 साल यही हुए ना, तो चारों साल में वो क्या हो रहा है? ही इज स्टेइंग मोर देन। तो मैंने क्या सेंटेंस लिखा है आपको? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ही स्टेज फॉर मोर देन 120 प्रीवियस ईयर लिखो। एंड ड्यूरिंग 4 previous years preceding relevant, immediately preceding relevant previous year he stays more than 365 days। लिखो लिखो, लिखा नहीं आपने? लिखा है ये? अरे आंसर में नीचे, हाँ उसमें लिखा है ना मैंने, लास्ट लाइन क्या लिखा है आपको? हाँ, as he stayed during previous year, his stay during previous year exceed 120 days, exceed 120 days, and during 4 previous year, and during 4 previous year immediately preceding relevant previous year, immediately preceding relevant previous year his stay exceed 365 days। बरोबर। फिर नीचे टेबल बनाओ। ताकि आपको समझेगा ना कि 4 प्रीवियस ईयर कौन से है। लिखो ये नीचे वाला टेबल लिखो, ऊपर वाला क्या थोड़ा ऐसे रफ था, नीचे वाला लिखो। बाकी लोग आए नहीं अभी तक। उसके अलावा
ये टेबल लिखा, समझाइए, क्योंकि वो इंडिया में ही था ना पूरा, तो मैं वही बोल रहा हूँ 4 साल में जो भी आया तो फुलफिल हो गई ना, समझाइए। पैराग्राफ चेंज, एक लाइन ही लिखनी है। Therefore, Mr. X will be resident and not ordinarily resident. Resident and not ordinarily resident. Will be resident and not ordinarily resident. अभी आ जाए क्वेश्चन 5 पे। ये समझा आपको? समझा आपको? क्वेश्चन 5, एक्स अ फॉरेन नेशनल, एक्स क्या है? इंडियन सिटीजन है क्या? नॉट बीन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडियन ओरिजिन का भी नहीं है, मतलब कोई भी एक्सेप्शन में आएगा क्या? एक्सेप्शन में नहीं आएगा, मतलब वो कोई भी कंडीशन फुलफिल करेगा तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 15, 2019. During previous year 1920, 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, he is in India for 130, 80, 210, 60, 75 days respectively. Determine his residential status. बराबर? तो लिखो, Mr. X is neither Mr. X is neither Indian citizen. Mr. X is neither Indian citizen nor person of Indian origin. Mr. X is neither Indian citizen nor person of Indian origin. Is neither Indian citizen nor person of Indian origin, and so will not fall in any of the exceptions full stop. Therefore, in given case, X will be resident. Therefore, in given case, X will be resident if he fulfills any one or both of the basic conditions. Any one or both of the basic condition. Correct? ये समझा? अच्छा, अब वो आया है प्रीवियस ईयर 1920 से, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1920 में कितने दिन था वो, देखो डेज दिए हुए क्वेश्चन में, देखो उसने दिया है 1920 में 130 दिन था, फिर कितना, करेक्ट। अब हमको पता करना है कि वो रेजिडेंट है या
अच्छा, अभी हमारे प्रीवियस ईयर में कितना दिन है? 75, और पीछे के 4 साल में देखो 365 हो रहा है क्या? 480 डेज, मतलब रेजिडेंट हो गया वो। तो लिखो, ये टेबल बनाओ, पहले ये टेबल बनाओ। यस गाइस, लिखा सबने? तो के आंसर लिखो पहले, ये राइट साइड वाला बाद में फिल करेंगे अपन। नीचे लिखो, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर X stays for 75 days and during 4 previous years, immediately preceding relevant previous year, X stays for 480 days. X stays for 480 days. बरोबर? Therefore, X has satisfied basic condition 2. Therefore, X has satisfied basic condition 2. And so is resident during previous year 2023-24, assessment year 24-25. Paragraph change. An individual who is resident is regarded as not ordinarily resident if such individual satisfies one or both of the following additional conditions. Any one लिखना, any one or both
ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस। पहली एडिशनल कंडीशन क्या है? और लेस। लिखो नंबर 1, इंडिविजुअल शुड स्टे for 729 or less days, for 729 or less days during 7 previous years, immediately preceding relevant previous year, immediately preceding relevant previous year, during 7 previous year, immediately preceding relevant previous year. Number two, नॉन रेजिडेंट वाली है ना ये, नॉट ऑर्डिनरी। मैं बोला एक पढ़ो, दोनों मत पढ़ो, मिक्स कर दूंगा एग्जाम में। शुड बी नॉन रेजिडेंट, should be non-resident, should be non-resident in 9 out of 10 previous years, in 9 out of 10 previous years, immediately preceding relevant previous year। बरोबर, immediately preceding relevant previous year। पैराग्राफ चेंज। अभी यहाँ पे देखो, ये तो हमारा प्रीवियस ईयर है, हमारे प्रीवियस ईयर में तो रेजिडेंट है क्योंकि बेसिक कंडीशन 2 फुलफिल कर दिया, बरोबर। अब बचे हुए 4 साल। अब इसमें देखो ये 60 डेज है, नीचे के 4 साल में कितना हो जाता है 365 से प्लस, तो ये भी क्या हो गया, रेजिडेंट बेसिक कंडीशन 2, 210 बेसिक कंडीशन 1, बरोबर। फिर रेजिडेंट कि नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट 80 दिन है पर 365 का है, 130 दिन ही है ना। उसके नीचे तो था ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही आया है वो 19 में। देखो क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 15, 2019। देखा, तो इसके पहले तो कभी था ही नहीं वो इंडिया में। यहां पर भी क्या हो जाएगा, और इसके पीछे तो नॉन रेजिडेंट ही है। 18, 19, 17, 18, 16, 17, इन सब में तो क्या है, नेवर इन इंडिया, सो नॉन रेजिडेंट आए ना। अब देखो लास्ट 10 साल में से वो 8 साल में नॉन रेजिडेंट है क्योंकि 2 साल में रेजिडेंट है ना। लास्ट 10 साल में से 2 साल में रेजिडेंट है, तो 8 साल में क्या हुआ, तो ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन तो फुलफिल नहीं की। लास्ट 7 साल में 480 दिन है, 4 और पीछे के 3 में 0 ही है ना, तो 7 साल में 480 दिन तो फुलफिल कर दी, तो क्या हो गया, नॉट ऑर्डिनरी। लिखो in 7 previous years, immediately preceding relevant previous year,
X stays for 480 days. So has satisfied additional condition 1. So has satisfied additional condition 1. So has satisfied additional condition 1. Full stop. X is resident. X is resident in 2 previous years. X is resident in 2 previous years out of 10 previous year. That is non-resident in 8. Non-resident in 8 previous year out of 10 previous year. Does not satisfy additional condition 2. Does not satisfy additional condition 2. Does not satisfy additional condition 2. So X is resident and not ordinarily resident. So X is resident and not ordinarily resident during previous year. During previous year 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25. ये टेबल में जो राइट साइड में मैंने लिखा है कंप्लीट करो. टेबल में राइट साइड वाला कंप्लीट करो और उसके नीचे ऐसा लिख दो 18-19 टू डॉट 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 डॉट. ऐसे 18-19 लिख के नीचे डॉट 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 कर दो. तो वो सब साल में तो था ही नहीं ना इंडिया में. नेवर इन इंडिया सो नॉन रेजिडेंट. समझा मैंने क्या बोला? ये समझा? ये आंसर एक बार रीड करो आप लोग और उसके बाद क्वेश्चन 6 करेंगे अपन. अभी 6 में आपने थियरी तो लिख के रखी है. वो जो थियरी लिख के रखी है उसके नीचे आप टेबल बना सकते हो 10 साल का. ये जो ईयर्स दिए सबका टेबल बना सकते हो जैसे भी मैंने बनाया था. प्रीवियस ईयर, नंबर ऑफ डेज, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. कर सकते हो? कर सकते हो? करो. वो टेबल बनाओ फिर कंटेंट लिखेंगे. पहले एक बार क्वेश्चन 5 रीड कर लो. पहले क्वेश्चन 5 का आंसर. क्वेश्चन 5 का आंसर रीड कर लो पहले, फिर उसके बाद टेबल बनाओ. समझे मैंने क्या बोला? रिकॉर्डेड वालों आपको भी क्वेश्चन 6 का टेबल बनाना है पूरा पहले और 5 पहले रीड करने के बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे. टेबल पता समझा ना कैसे बनाना है? प्रीवियस ईयर, नंबर ऑफ डेज, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट. गाइस टेबल बनाया? बनाओ बनाओ. आपको चाहिए तो 6 की जगह पे लास्ट वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट के पीछे बना लो. जगह ही जगह है. कैलकुलेटर क्यों चाहिए आपको? डेज तो डायरेक्टली दिए. हाँ दिए ना डायरेक्टली क्वेश्चन में. बनाओ टेबल जल्दी जल्दी बनाओ. हितेश अंकल अभी तो बताया था. अभी पीछे वाले समय बनाया था ना, वैसे ही तो बनाना है. कौन से ईयर तक दिया है अपने को?
डेज बोलो मुझे, 23 24 का 126 10 65 305 181 360 16 360 180 65 5 6 बरोबर। तो देखो अभी रेजिडेंट होता है कि नॉन रेजिडेंट, करो जल्दी। टेबल तो मैंने बना दिया। गाइस रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट हमारे पीएससीएस में? देखो हमारे साल में कितना दिन है वो, हमारे साल में कितना दिन है 126, और पीछे के 4 साल में कितना दिन है 365 से ज्यादा दिख ही रहा है ना, 305 तो यही हो गए। तो कितने हैं, नहीं तो कितने दिन बोले आप, बोले ना 561 डेज बरोबर। 360 कैसे, 4 साल यहाँ तक ही होता है बरोबर। मतलब ये रेजिडेंट हो गया। अब हमको डिसाइड करना है कि ऑर्डिनरी है या, उसके लिए दो एडिशनल कंडीशन, दो एडिशनल कंडीशन में पहली 729 डेज लेस वाली, तो पहले वो चेक करें हम 729 लेस वाली के साथ कितने दिन होते हैं। वन टू 9 7 डेज बरोबर है क्या? मतलब इसने वन वाली तो फुलफिल नहीं की। अब दूसरी चेक करें हम लोग, दूसरी फुलफिल की है क्या इसने? अभी देखो पहला 22 23, ध्यान से देखो 22 23 में कितने दिन है वो, तो नॉन रेजिडेंट होने वाला है, आया ना। यहाँ पे बेसिक कंडीशन हुआ, 65 डेज वाले में रेजिडेंट हो जाएगा, बेसिक कंडीशन 2 बरोबर। ये समझा, 65 डेज वाला समझा, हमारे साल में 65 और नीचे के 4 साल में 365 हो गया, 305 305 में दोनों फुलफिल हो रही है, बेसिक कंडीशन 1 एंड 2 दोनों फुलफिल हो रही है। देखो 181 में वापस बेसिक कंडीशन 2 फुलफिल हो रही है, 360 डेज में दोनों फुलफिल हो रही है, 16 में नॉन रेजिडेंट हो गया। हाँ दोनों नहीं होगा, एक ही होगा, 2 नहीं हो रही है। देखो 365 कहाँ हो रहा है, ये देखो इधर इधर 1 2 3 4 रेजिडेंट बेसिक कंडीशन 2 बराबर ना। अभी देखो 10 साल का भी खत्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद 8 9 10 2 साल और बाकी, 65 वाले में भी हो जाता है रेजिडेंट, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ये भी नॉन रेजिडेंट। अभी देखो 10 साल तो हो गए, 7 8 9 10, यहाँ पे 10 साल खत्म हमारे, बरोबर। अभी 10 में से कितने साल नॉन रेजिडेंट है, 1 2 3, होना कितना चाहिए 9, है कितना 3, मतलब एक भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल, इसलिए क्या हो गया ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या हो गया ऑर्डिनरी रेजिडेंट, समझे। क्योंकि हम कौन सी कंडीशन चेक कर रहे हैं, नॉट ऑर्डिनरी वाली। कौन सी चेक कर रहे हैं, नॉट ऑर्डिनरी वाली, बरोबर। वापिस एक बार बोलता हूँ, दो एडिशनल कंडीशन है, 729 और लेस, वो तो फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि 7 साल में कितना दिन है 1297 बरोबर। फिर दूसरी है 9 आउट ऑफ 10 नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, पर ये तो 3 ही साल में नॉन रेजिडेंट है, वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन इज फुलफिल्ड, सो ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सो ही इज
समझे क्या? बराबर से तो लिखे आंसर, ये टेबल बना लो पहले, फिर आंसर लिखेंगे। ये ऊपर का लिखा है हितेश, ये लिखा है। सब जन लिखो रे, रिकॉर्डेड वालों भी। टेबल कंप्लीट हुआ सबका? नितेश हुआ लिख के? उसका विनय का हुआ नहीं अभी तक। देखो घर तो नहीं चला गया है। लिखा ही है। बस कविता मत भूलिए, आपने लिखा क्या ये? सबने लिखा? तो नीचे लिखिए अभी कमेंट। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2023-24, नहीं नहीं ऐसे मत लिखो, ये नॉन रेजिडेंट है ना, तो पहला लाइन तो वही लिखना पड़ेगा अपने को। फॉरेन सिटीजन है ना, सॉरी, लिखो, ये लाइन कट करो। मिस्टर एक्स इज नाइदर इंडियन सिटीजन, मिस्टर एक्स इज नाइदर इंडियन सिटीजन nor person of Indian origin. Mr. X is neither Indian citizen nor person of Indian origin, and so will not fall, and so will not fall in any of the exceptions, and so will not fall in any of the exceptions to basic condition 2, in any of the exceptions to basic condition 2.
full stop. During previous year, during previous year 23-24, X stays for 126 days. X stays for 126 days, and during four previous year preceding relevant previous year, X stays for 561 days. X stays for 561 days. Thus, X has fulfilled. Thus, X has fulfilled basic condition 2 and is resident during previous year. And is resident during previous year. And is resident during previous year. Paragraph change. An individual who is resident is regarded as not ordinarily resident if he satisfies anyone or both additional conditions. Following additional conditions. Both following additional conditions. Any one or both of the following additional conditions. Number 1. Such individual should stay in India for 729 or less days during 7 previous years immediately preceding relevant previous year. Number 2, such individual should be non-resident in 9 out of 10 previous years immediately preceding relevant previous year. Immediately preceding relevant previous year. Paragraph change. In given case, X stays for 1297 days. X stays for 1297 days during 7 previous years. Immediately preceding relevant previous year.
and is non-resident in 3 previous years and is non-resident during 3 previous years out of 10 previous years immediately preceding relevant previous year. Immediately preceding relevant previous year. Immediately preceding relevant previous year. Thus, X has not satisfied any of the additional condition. X has not satisfied any of the additional condition, and so is resident and ordinarily resident during previous year 2023-24 during previous year 2023-24 assessment year 2024-25 assessment year 2024-25 समझा? ऐसे बड़े बड़े समय के तो कर सकते हो अभी आप 8 मार्क के लिए भी आ सकता है और 12 मार्क के लिए भी आ सकता है. समझाइए सबको. क्वेश्चन 8. X, an Indian citizen, left India first time on 1/7/23 for higher studies in USA. Determine his residential status. बोलो आंसर. एक्सेप्शन में नहीं आता है. बरोबर. ठीक है. बरोबर. वाह. समझा सबको. राउंड ऑफ प्लस फॉर मनन. बस बस बस. अभी मेरे को डर है अगला आंसर रॉन्ग देगा ही. तारीफ कर दी अपन ने. शी याद नहीं दिलाया आपने. ठीक है, लिखो आंसर फिर. तो लिखो फिर, खुद ही लिखो. चलो क्या लिखे, मतलब क्या होता है. टेबल क्यों बनाना है इसमें. बिना टेबल के हो जाएगा ना. लिखो. इन गिवन केस Mr. X has gone outside India for higher studies and so does not fall in any of the exceptions
and so does not fall in any of the exceptions. Full stop. During previous year, during previous year, X stays for कितने दिन? अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई का 1, तो 92 डेज. X stays for 92 days. ब्रैकेट में लिखो 30, 31, 30 और 1. बराबर. एंड stays for more than 365 days, and stays for more than 365 days during 4 previous years immediately preceding relevant previous year, immediately preceding relevant previous year. Therefore, X has satisfied basic condition 2 and is resident during previous year 2023-24. 2000, correct? Paragraph change. An individual who is resident is regarded as not ordinarily resident, is regarded as not ordinarily resident is regarded as not ordinarily resident if he satisfies any one or both of the following additional condition. If he satisfies any one or both of the following additional conditions. बराबर. नंबर 1 1 और 2 बाजू से लिख सकते हो, वैसे का वैसे लिखो. बाजू में एडिशनल कंडीशन लिखाया था ना आपको, वैसे कैसे दोनों लिख लो. लिखी दोनों कंडीशंस.
और लिख के तो लिखो आगे, इन गिवन केस x stays for all 365 days, all 365 days each year during preceding years, during preceding years. Therefore, x will not satisfy any of the above additional conditions. X will not satisfy any of the above additional condition. Above additional condition, and therefore x is resident and ordinarily resident. Resident and ordinarily resident. बरोबर, क्या लिखा बना, x will be during previous year 2023-24, assessment year 24-25. समझ में आया? अभी क्वेश्चन 7 रीड करो. क्वेश्चन 7. मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल क्यों लेके जाना है आपको? क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7. चलो क्वेश्चन 7 रीड करो. याद आ रही है? होमवर्क याद नहीं रहता है उसको, लेकिन ये याद रहता है. देखो भाई, एक्स एन इंडिविजुअल is resident but not ordinarily resident in India for assessment year 2024-25, previous year 23-24. During previous year 23-24, affairs of ex-HUF whose karta is X since 1962 are partly managed from Delhi, partly from Nepal. Determine residential status of ex-HUF. HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं अक्षर? नहीं. तो होली पार्टली क्या था? और पार्टली होली इंडिया रहेगा तो रेजिडेंट. देखो याद नहीं है, याद करना पड़ेगा भाई. लिखिए आंसर. As per section 6 of Income Tax Act, as per section 6 of Income Tax Act, an individual, an HUF, an HUF is regarded as resident, if its control and management is wholly
is wholly or partly, is wholly or partly from India. Full stop. If control and management is wholly from outside India, if control and management is wholly from outside India, HUF is regarded as non-resident. HUF is regarded as non-resident. बरोबर? If control and management is only from outside India, then HUF is regarded as non-resident. Paragraph change. In given case, control is partly from India and partly from Nepal. Control is partly from India and partly from Nepal. And so HUF is regarded as resident in India. Is regarded as resident in India. Full stop. Once HUF is resident, paragraph change करके, once HUF is resident, it is regarded as ordinary and not ordinary. It is regarded as ordinary and not ordinary based on Karta of HUF. Based on Karta of HUF. If Karta is not ordinary, HUF is not ordinary. If Karta is ordinary, HUF is ordinary. In given case, in given case, Karta is not ordinarily resident. Karta is not ordinarily resident. So XHUF is also resident and not ordinarily resident during previous year 2023-24 assessment year 2024-25. बरोबर? समझाइए पक्का. रीड क्वेश्चन 4. स्कोप ऑफ इनकम पे सब में ये करेक्ट. ये सब किस पे है? स्कोप ऑफ इनकम पे. अभी देखो इसमें क्या दिया है अपने को. X furnishes the following particulars of his income earned during previous year. Interest on German development bond 60,000, 24,000 received in India. कितना तीनों पे कितना किस पे वो बताओ पूरा अच्छे से. किस पे?
60, 24, 24। क्या आंटी बराबर बोल रही है? वापस बोलो, उसको नहीं समझा। देखो 60,000 में दो हिस्से, 24 रिसीव्ड इन इंडिया, 36 नॉट रिसीव्ड इन, करेक्ट। जर्मन बॉन्ड है तो एक्रूड तो बाहर ही हुई, तो जो रिसीव्ड इन इंडिया तीनों के हाथ में, लेकिन जो नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, नॉट एक्रूड इन इंडिया, वो खाली एक के हाथ में, आर एंड ओ आर। आर ओ आर के हाथ में सब टैक्स होता है ना, बरोबर। तो मुझे आपको साथ के साथ लिख के भी बताना पड़ेगा। Computation of gross total income. Previous year 23, assessment year, particulars, X is R and और लास्ट में NR, बरोबर। चलो स्टार्ट करें। पहले मैं बताता हूँ, फिर बाद में आप लिखना। देखो सबसे पहले इनकम क्या दी है अपने को, इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड। ये क्या हुआ,
accrued outside India, बरोबर, received in India 24, वो तीनों के हाथ में टैक्स होगा, आया ना, received outside India, ये खाली किसके हाथ में टैक्स होगा, रिसीव्ड बाहर, एक्रूड बाहर, नाइदर कंट्रोल नॉट मैनेजिंग, समझे, समझाइए, हितेश काका समझा, भूमि समझा, जब भूमि ने तो आंसर दिया था तो भूमि को तो समझा ही होगा। देखिए नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश रिसीव्ड देयर but rupees 50,000 later on remitted in India. Agriculture activities controlled from Bangladesh. क्यों क्यों agriculture income from agriculture land in Bangladesh, आया ना, accrued outside India and received outside India, तो खाली एक के हाथ में टैक्स होगा, जब इनकम अर्न होती है तब तो टैक्स लगेगा, जब रिमिट होती है तब टैक्स, यहां कोइंसिडेंटली अर्निंग और रिमिटेंस सेम साल में है, अगर अर्न पहले कोई साल में हुआ होता और इस साल सिर्फ रिमिट होता तो टैक्स नहीं होता था, पर यहाँ पे अर्न भी ये साल में हो रहा है, रिमिट भी, तो अर्निंग के समय तो हमको टैक्स करना पड़ेगा ना, समझे क्या, समझ में आया ये। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कनाडा कहां पर है, इंडिया में है क्या वो, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा यानी एक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है ना, रिसीव्ड देयर ओनली, ऐसे क्या कर रहे हो, कितनी इनकम है, ये खाली किसके हाथ में टैक्स होगी, बाकी किसी के हाथ में टैक्स, समझा क्या ये भूमि आंटी। फिर इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कंपाला, कंपाला कहां पर है, युगांडा, युगांडा कहां पर है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया में तो नहीं है, विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, 15,000 रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंपाला, एक्रूड आउटसाइड इंडिया, आया ना, रिसीव्ड इन इंडिया कितना है, ये तीनों के हाथ में होगा, करेक्ट, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो दो के हाथ में कितना, 50-50, टोटल इनकम कितना था, उसमें से 15 रिसीव्ड, तो बचा कितना, 50, समझा, एवरीबडी अंडरस्टूड, बहुत टाइम है मनन। डिविडेंड पेड बाय फॉरेन कंपनी बट रिसीव्ड इन
डिविडेंड पेड बाय फॉरेन कंपनी। ये क्या हो गया? एक्रूड आउटसाइड इंडिया, और क्या बोला है? रिसीव्ड इन इंडिया, बरोबर। तो कितना अमाउंट है? तो तीनों के हाथ में होगा। हाँ, एक्रू तो आउटसाइड इंडिया वाला, रिसीव्ड हुआ तो तीनों के हाथ में हो जाएगा ना। इंडिया में रिसीव हुआ तो तीनों के हाथ में ना। तो क्या देख रहे हो, क्या डाउट है? 6 एक्रूड या रिसीव्ड में से कुछ भी इंडिया में हो गया तो तीनों के हाथ में। इंडिया में ना हो और बिजनेस कंट्रोल रहेगा या प्रोफेशन सेटअप रहेगा तो दो के हाथ में, वो भी ना हो तो खाली एक के हाथ में, बरोबर। फिर पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया इन करंट प्रीवियस ईयर, ये क्या हुआ? रिमिटेंस। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट इनटू इंडिया, ये क्या हुआ? रिमिटेंस। किसी के भी हाथ में टैक्स नहीं होगा, बरोबर। फिर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मद्रास मैनेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, किसके हाथ में टैक्स होगा? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस मद्रास, एक्रूड इन इंडिया हो गया ना, मद्रास में बिजनेस है तो आया ना। मैनेज कहीं से भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कंट्रोल कहीं से भी, इंडिया में बिजनेस चल रहा है ना। कितनी अमाउंट है? तीनों में टैक्स होगा। रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, आया ना। फिर आठवां, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया रिसीव्ड इन श्रीलंका, अगर इंडिया की बिल्डिंग बिकी मतलब इंडिया की एक्रू हुई ना। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, तो ये क्या हो गया? एक्रूड रिसीव्ड, तो भी इंडिया में टैक्स होगा। कितना? समझाइए, अरे समझा क्या? फिर पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन रंगून, सैलरी फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, तो ये क्या हो गई? एक्रूड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में सर्विस दी उसकी वजह से पेंशन मिल रही है ना। अरे हाँ है ना। रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कितना? जी जी, समझाइए। नेक्स्ट क्या दिया है? गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव टैक्स ही नहीं होता है,
कहीं पे भी नहीं होता है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव नॉट टैक्सेबल। अभी इधर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय किधर आ गया? तो बताओ ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी अपनी? किसका कर रहे हो पहले? 24, 36, 60, 241, 27, 327, 342, 392, 392, 519, 519, 525, 565, 500, 565, 500, 571, 500, 6 lakh 1,500, 20 lakh 81,500। यही है क्या? वापस टोटल कर लो एक बार। 36 है। 26 बोले आप? नाइनटीन लगे क्या? दूसरे का तीसरे का? किया? थर्ड का चेक करो। बराबर। समझाइए। एग्जाम में ऐसे स्कोप ऑफ इनकम का सम आएगा तो कर पाओगे पक्का? तो कॉपी कीजिए। रिकॉर्डेड वालों कॉपी कीजिए। यहाँ तक हुआ? नितेश अंकल लिखो। लिख नहीं रहे आप कुछ भी? वापिस रिकॉर्डेड देख के आपने लिख लिया?
क्योंकि वो एक्रूड हो गया तब तो कहीं पे भी रिसीव हुए टैक्स यही होने वाला है। बस वहाँ लिख के एक ही दिन में, एक ही दिन में। वहाँ लिख के जब आपके सर बोलेंगे तब। वहाँ लिख के ये समझा सबको। ऐसे सम आएंगे तो एग्जाम में कर सकते हो आप, ऐसे सम कर सकते हो एग्जाम में सब जन। अभी देखो अपन ने सब सम्स तो कर लिए। अब आते हैं यहाँ पर। ये देखो कल अपन पेज नंबर 15 पे थे, तो आपको मैंने सेक्शन 9 पढ़ाया था। एक बार सेक्शन 9 रीड करो। 15 पे अपने को रॉयल्टी समझना है, रॉयल्टी का मीनिंग समझना है अपने को। हाँ तो रॉयल्टी नहीं पढ़ना है, जो बचा हुआ पढ़ा हुआ है सेक्शन 9 है वो एक बार रीड कर लो। जल्दी से सेक्शन 9 रीड कर लो, फास्ट। हाँ फास्ट 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 फास्ट। सेक्शन 9 रीड कर लो, फिर अपन रॉयल्टी का डेफिनेशन पढ़ेंगे।
करता हूँ तो मेरे इधर लाल लाइन बरोबर दिख रही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। चालू है। चलो आ जाओ पेज नंबर 15। देखो आपको कल बताया था 3 टाइप की रॉयल्टीज इंडिया में एक्रू मानी जाती है। एक अगर गवर्नमेंट ने आपको पे की है, अगर किसी रेजिडेंट ने पे की है, पर रेजिडेंट जब बाहर के किसी काम के लिए लेगा तब नहीं। नॉन रेजिडेंट ने पे की इंडिया में काम करने के लिए, तो उस केस में वो क्या होता है, टैक्स। बरोबर। अभी देखो एज पर एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 916 फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एनी lump sum consideration but excluding any consideration which would be the income of recipient chargeable under the head capital gain। मतलब रॉयल्टी मतलब होता है कोई भी कंसिडरेशन दिया इंक्लूडिंग लम सम, पर बेचने के लिए नहीं। जैसे सपोज करो कि अभी भूमि ने एक इन्वेंशन की, भूमि ने क्या किया, एक दवा बनाई। वो दवा बनाई, ऐसी दवा बनाई जिसको खाते से ही टैक्स याद आ जाता है, टैक्स। फिर ऐसी कॉस्टिंग की सब दवा बनाई उसने, और वो दवा अभी वो खुद बना के नहीं बेच रही है, वो किसी को राइट दे रही है। तो समझो मुझे बोला कि आप बना के बेचो, जो आपकी इनकम आएगी उसका 25% मुझे देना, तो रॉयल्टी हो गई। समझो उसने दवा का पूरा राइट ही मुझे बेच दिया, बोला सर ये दवा का पूरा लाइसेंस फॉर्मूला आपको देती हूँ मैं, मुझे आप 50 करोड़ दे दो, मैंने दे दिए, तो फिर वो बेचना हो गया, फिर रॉयल्टी नहीं हुई। समझे, तो रॉयल्टी मतलब बेचना नहीं होता है। समझे। फॉर, देखो लिखा हुआ है क्लियरली, फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी, imparting of any information concerning working of or use of patent, invention, model, design, secret formula, process, trademark। यानी देखो पहले में क्या बोला है कि हम राइट क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राइट। बरोबर। दूसरे में imparting any information, क्या कर रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसके रिलेटेड, वर्किंग के रिलेटेड। तीसरे में क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ पेटेंट, ये सब का यूज के लिए पैसा दे रहे हैं। चौथे में इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, साइंटिफिक, ये चीजों के बारे में। फिर ये एक तो डिलीट हो गया। फिर ट्रांसफर, ये पांचवा, यूज ऑफ राइट, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, साइंटिफिक। बरोबर। ट्रांसफर ऑफ ऑल और राइट्स इंक्लूडिंग ग्रांटिंग लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट, लिटरेसी, artwork, scientific work, film, videotape in connection with and so on। फिर rendering of any service in connection with activity referred to in 1 to 4 above, इनके रिलेटेड कोई सर्विस दी तो। मतलब देखो सिंपल भाषा में अगर अपन बात करें तो रॉयल्टी मतलब क्या होता है, कोई भी आपने कोई इन्वेंशन की, कोई फॉर्मूला बनाया, कोई मॉडल बनाया, कोई आपने डिजाइन बनाई, कोई आपने इन्वेंशन की, कोई चीज आपने लिखी है, लिटरेचर बोलो या कोई साइंटिफिक रिसर्च बोलो, कोई इंडस्ट्रियल रिसर्च बोलो, कोई कॉमर्शियल रिसर्च बोलो, इन सब आप किसी और को देते हो और वो बदले में आपको पैसा देता है।
उसको रॉयल्टी बोलते हैं। पर आपने उसको बेचा नहीं है, बेचा नहीं है। बेचेंगे तो फिर यहाँ टैक्स नहीं होती, फिर कैपिटल गेन में टैक्स होती है, इसको रॉयल्टी नहीं बोलते हैं, समझे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोलते हैं। समझ में आया क्या? बरोबर से आगे। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट it is hereby clarified that transfer of all or any right in respect of any right, property or information includes and has always included transfer of all or any right for use, right to use computer software irrespective of medium through which such right is transferred। यहां पर उसने क्या बोला है कि अगर हमने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसी को यूज करने के लिए दिया है तो उसके रिलेटेड जो पैसा मिलेगा वो रॉयल्टी में माना जाएगा, इरिस्पेक्टिव आपने कैसे ट्रांसफर किया। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक हम सीडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, पेन ड्राइव में, या ऑनलाइन अपन डाउनलोड कर लो, लिंक दे देंगे डाउनलोड कर लो। तो देखो व्हाट डज अबाउ मीन। एक्सप्लेनेशन 4 of section 9 clarifies that payment received for transfer of all or any right for use of computer software including granting license is royalty। Therefore if a recipient imports a software from abroad and get a license to use software from abroad, then payment received by foreigner shall be treated as royalty since the software is used in India। Royalty shall be taxable in hands of foreigner in India and the Indian making payment shall deduct TDS under section 195। उसको टैक्स काट के पैसा देगा। हाँ या ना? Explanation 5 has been inserted to clarify that royalty includes consideration in respect of any right, property, information, whether or not possession or control of such right is with the payer. Such right, property, information is used directly by payer. Location of such right, property, information is in India। अब यहाँ पे देखो whether or not है, ये क्या लिखा है? whether or not मतलब हमने किसी को कोई भी चीज यूज करने के लिए पैसा दिया, कोई राइट, प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन। अब possession or control of the right is with payer or not। अब कैसा होता है, ये जो बैंक वाले एटीएम वगैरह अपन यूज करते हैं ना, तो उसका जो सिस्टम रहता है वो सर्वर पे अपलोड रहता है, और जो सर्वर रहता है वो इंडिया के बाहर रहता है। तो अभी इंडिया वाले वो यूज कर रहे हैं, पर सर्वर की लोकेशन कहाँ पर है? इंडिया के बाहर। तो जो फॉरेन कंपनी थी जो उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती थी, उसने बोला ये इंडिया में टैक्स नहीं होगा क्योंकि इंडिया में लोकेटेड नहीं है। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि ऐसी कोई सर्विस जो इंडिया में यूज हो रही है, भले ही उसकी पोजीशन जो टैक्स दे रहा है उसके पास है या नहीं है। तो यहाँ पे पोजीशन किसके पास थी? किसी और के पास। सर्वर की पोजीशन किसके पास है? वो फॉरेन कंपनी के पास में। वेदर इट इज यूज डायरेक्टली बाय पेयर, पेयर खुद यूज नहीं कर रहा है, उसने अपने कस्टमर्स को एटीएम दे दिए, कस्टमर लोग यूज कर रहे हैं उसको, तो भी वो क्या माना जाएगा? एज इफ इंडिया में एक्रू हो रहा है। लोकेशन उसकी बाहर है पूरी, इंडिया में हो या ना हो, क्योंकि वो सर्वर रखा ही बाहर है ना, बरोबर। Explanation 6 has been inserted to clarify the expression process include transmission by satellite including uplink, amplification, conversion for download, etc. cable, optic fiber or any other similar technology whether or not such process is secret। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जब हम प्रोसेस वर्ड बोल रहे हैं तो प्रोसेस एक तरीका होता है, तो वो जो प्रोसेस विल इंक्लूड, चाहे आप अपलोड करो चाहे डाउनलोड करो, और वो अलग अलग फॉर्म में। जैसे अभी कोई भी चीज होती है उसको अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। जैसे अभी समझो मेरे को मेरे वीडियो लेक्चर बनाने हैं मैंने मेरे वीडियो लेक्चर बना लिए, उसकी फाइल को एनक्रिप्ट कर दिया, मैंने आपको मेल कर दिया। अब आप मेल डाउनलोड कर लो, फिर आप अपने कंप्यूटर पे जैसे ही ऑन करोगे तो वो पासवर्ड मांगेगा, मैं आपको पासवर्ड दूंगा तो चलेगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग इन पेन ड्राइव एंड ऑल। दूसरा, मैं आपको सीधा सर्वर का मेरा जो स्पेस है वहाँ का लिंक दे दूँ, तो आप मेरे सीधे सर्वर पे जाओगे, लेक्चर ऑन करोगे, प्ले हो जाएंगे, पर आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने उसको लॉक करके रखा है। समझे बरोबर से? एक बार ये वापस रीड कीजिए रॉयल्टी का डेफिनेशन, रॉयल्टी का डेफिनेशन सब जन रीड कीजिए एक बार। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? Rendering of any service in connection with the activity referred to in 1 to 4 ऊपर, ये जो ऊपर दिए हैं
इनके रिलेटेड कोई भी सर्विस, जैसे अभी मैंने आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करने को दिया तो मैं क्या करूंगा, उसकी सर्विस भी तो दूंगा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा तो मैं अपडेशन भेजूंगा, तो वो सबके भी तो पैसे लूंगा, वो सब रॉयल्टी में ही आएगा। समझे? अब देखो सॉफ्टवेयर में अपडेशन आती है, वो बोलता है अभी देखो अपन व्हाट्सअप यूज करते हैं उसमें अपडेट आती रहती है, तो वो बोलता है ना अपडेट करो, तो अपन अपडेट करते हैं ना, तो वो भी तो सर्विस दे रहा है ना वो अपने को। तो जब अपन पैसा लेके लेंगे सॉफ्टवेयर तभी भी तो अपडेशन देगा, रॉयल्टी लगेगी, उसको रॉयल्टी माना जाएगा। रीड किया? समझा? अभी देखो रॉयल्टी का मीनिंग मैंने आपको लास्ट में क्यों पढ़ाया, क्योंकि देखो उसके बगैर अपन ने सब सम्स तो कर ही लिए थे। अब देखो नीचे कुछ चीजें दी है जो मॉड्यूल में दी है, पेज नंबर 18 पे, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग लाइबिलिटी टू इनकम टैक्स इन इंडिया ऑफ अ नॉन रेजिडेंट सी फेयरर रिसीविंग रेम्यूनरेशन इन नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मेंटेन विद एन इंडियन बैंक। अभी कैसा होता है, कोई नॉन रेजिडेंट का इंडिया की कोई बैंक के पास उसने नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खोला, ये नाम है नॉन, जैसे अपन सेविंग अकाउंट बोलते हैं, करंट अकाउंट बोलते हैं ना, वैसा ये नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है, बरोबर। ये खाली नॉन रेजिडेंट लोग ही खोल सकते हैं और कोई खोल नहीं सकता है। इनकम बाय वे ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट सी फेयरर फॉर सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप with Indian flag or foreign flag and received in the NRE account maintained it with Indian bank shall not be included in total income। इसका मतलब क्या हुआ, कोई नॉन रेजिडेंट है जो सी में ट्रैवल करता है, मतलब सी में जाता है, सी फेयरर मतलब सी में जाता है वो, और उसकी जो सैलरी है वो इसके ये नॉन रेजिडेंट अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो वो जो सैलरी उसकी नॉन रेजिडेंट अकाउंट में क्रेडिट हो रही है वो इंडिया में टैक्स नहीं होगी, क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं, वो सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया के बाहर। समझे बरोबर से? फिर मीनिंग ऑफ वर्ड एक्रूइंग एंड रिसीविंग। एक्रूइंग या रिसीविंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्रू होना मतलब अर्न करना, और रिसीव करना मतलब एक्चुअल में अभी जैसे सपोज करो आपके एम्प्लॉयर ने बोला आपको कि जो भी तू काम करेगा उसकी सैलरी तेरी ड्यू होगी अगले महीने की 5 तारीख को, और मैं तुझे पे करूंगा 10 तारीख को। तो जब आप पहले दिन काम कर रहे हो तब आपकी सैलरी अर्न हो रही है पर ड्यू नहीं हो रही, मतलब आप कमाते जा रहे हो, पर आपको राइट कब मिलेगा पैसे का? 5 तारीख को, अगले महीने की 5 तारीख को। ऐसे आपने पूरा महीना काम किया तो सैलरी आपने अर्न कर ली, मतलब एक्रू हो गई, पर ड्यू कब होगी? 5 तारीख। 5 तारीख को यू हैव राइट टू रिसीव, करेक्ट? 5 तारीख को आप अधिकार से बोल सकते हो कि सैलरी मैंने कमा ली है, और वो आपको देगा किस दिन? 10 तारीख को, बरोबर। तो अर्न करना या एक्रू होना मतलब अपन कमाना, और रिसीव करना मतलब एक्चुअल रिसिप्ट, बरोबर। देखो इसमें दिया हुआ है, एक्रू रेफर टू द राइट टू रिसीव इनकम whereas due refer to the right to enforce the payment of the same। मतलब जिस दिन ड्यू हो गई हम हक से जाके पैसा मांग सकते हैं, जब तक ड्यू नहीं होगी तब तक हम पैसा नहीं मांग सकते। For example, salary for work done in December will accrue throughout the month, day to day, but will become due on salary bill being passed on 31st December or 1st Jan, जैसा जैसा वो पास करेंगे उसके हिसाब से। Similarly, on government securities, interest payable on specified dates arise during the period of holiday, day to day, but will become due for payment on the specified dates। For example, interest on government security usually payable on specified dates। जैसे अभी आपका AS13 हुआ रहेगा, मुझे इन्वेस्टमेंट वाला हुआ है ना, 13 हो गया ना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, उसमें देखो ड्यू डेट रहती है इंटरेस्ट की, तो अपने को ड्यू डेट को ही पैसा मिलता है, उसके पहले हम कमाते जा रहे हैं, पर मिलेगा किस दिन? ड्यू डेट के दिन, बराबर। इट मस्ट बी नोटेड दैट इनकम विच हैज बीन टैक्स्ड ऑन एक्रूअल बेसिस कैन नॉट बी असेस्ड टू टैक्स्ड ऑन रेसिड बेसिस। कोई भी इनकम डबल टैक्स नहीं होती है अनलेस अंटिल स्पेसिफिकली बोला, तो ड्यू बेसिस पे टैक्स कर ली तो वापस रेसिड बेसिस पे टैक्स नहीं होगी। विथ अ व्यू to remove difficulty and clarifying doubts in taxation of income, explanation 1 to section 5 specifically provides that an item of income accruing or arising outside India shall not be deemed to received in India merely because it is taken into account in a balance sheet prepared in India। अभी जैसे कैसा होता है, कोई फॉरेन कंपनी है, उस फॉरेन कंपनी की कोई इंडिया की कंपनी
होल्डिंग कर रही है, तो अभी होल्डिंग कंपनी अपना कंसोलिडेशन बनाएगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें वो अपनी फॉरेन की सब्सिडरी का डेटा भी इंक्लूड करेगी। जस्ट बिकॉज कि वो फॉरेन की कंपनी का एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम को इंडिया वाली ने अपने इसमें इंक्लूड किया है प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, विल नॉट मेक दैट फॉरेन कंपनी लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया, बिकॉज फॉरेन कंपनी फॉरेन में टैक्स पे करेगी, इंडिया में क्यों पे करेगी? आया ना? Explanation 2 makes it clear that once an item included in income of SSE, total income, subject to tax on the ground of accrual, deemed accrual, it cannot again be included in person's total income and subjected to tax either in the same or subsequent year on the ground of its receipt, whether actual or deemed. एक बार accrual basis पे टैक्स हो गया तो वापस receipt basis पे टैक्स नहीं होगा। ये एक बार ये एक पेज रीड कर लीजिए जल्दी से, ये पेज रीड कीजिए। जो सी में जाता है, जल्दी जल्दी रीड कीजिए गाइस। मॉड्यूल और दोनों रीड करके, जैसे मैंने सब चीजें पढ़ाई है आपको इंपॉर्टेंट वाली, लेकिन फिर भी समझो आपको लगे कि मॉड्यूल में कोई चीज है जो आपको लिखनी चाहिए तो लिख लेने। रीड किया ये पेज, समझाइए। फिर इसकी के ऊपर, इसी पेज के ऊपर देखो क्या लिखा है, सेक्शन 5A लिखा। ये मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं है पर आपको पता होना चाहिए, इसका रेफरेंस बहुत जगह पे आता है। द पर्सन हु आर गवर्न बाय पुर्तगीज सिविल कोड ऑफ 1860 and are residing in state of Goa and Union Territory of दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप। मतलब कहाँ पे रह रहे हैं वो? गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, ये सब यूनियन टेरिटरीज है, गोवा स्टेट है, बराबर। ये दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, ये सब मुंबई के आगे सब जगह पे है। आर गवर्न बाय द सिस्टम ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी एज पर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इनकम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ गवर्न बाय पुर्तगीज सिविल कोड शैल बी अपोर्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पैसा कमाएगा हस्बैंड या वाइफ, वो दोनों में इक्वल बटेगा। समझो खाली हस्बैंड ने कमाया, करेक्ट, और वाइफ ने नहीं कमाया, तो जो भी हस्बैंड कमाएगा दोनों में इक्वल बटेगा। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो पुर्तगीज सिविल कोड से गवर्न होते हैं। लेकिन अगर सैलरी इनकम है तो वो दोनों में बटेगी नहीं, वो जिसकी जिसके उसके हाथ में टैक्स होगी। वापिस बोलता हूँ, जो भी पुर्तगीज सिविल कोड से गवर्न होते हैं ये वाले एरिया में, उन लोगों में से जो भी इनकम कमाएंगे, चाहे हस्बैंड कमाओ, चाहे वाइफ कमाओ, चाहे दोनों कमाओ, दोनों में क्या होगा? आधा आधा। लेकिन सैलरी छोड़ के, सैलरी की इनकम रिस्पेक्टिव पर्सन के हाथ में टैक्स होगी। बाकी जो भी इनकम दोनों में से जो कमाएगा दोनों में बट जाएगी और दोनों के हाथ में अलग अलग टैक्स होगी। समझे? बरोबर से। आगे देखो, this section does not cover income from salary and so it shall not be apportioned and it shall be taxed in hands of person earning such income। एक बार वापस रीड कर लो 5A, याद रखना 5A सेक्शन पुर्तगीज सिविल कोड के लिए है। इंडिया में ये एक्ट चलता है, जो इससे गवर्न होते हैं। ये बहुत पुराने जमाने में पास किया है, देखो 1860 है ना। पुर्तगीज लोग अभी जिंदा है, ऐसे थोड़ी कि नहीं है, थोड़े बहुत तो है ना, वहां रहते हैं ना अभी। चलो एक दिन ट्रिप बनाओ, गोवा लेके चलो, मुझे बताता हूँ, मिलाता हूँ आपको डाउट है? मेरे को नहीं, जिसको डाउट है वो खर्चा करेगा, जिसको डाउट है वो खर्चा करना चाहिए ना, मैं क्यों। रीड करो 5A। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म।
अब पूरा चैप्टर 2 अच्छे से वापस पढ़ना। अब आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूल से चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों पढ़ सकते हो। खाली ध्यान रखना चैप्टर 1 में एग्रीकल्चर इनकम है, 2 मिनट रुको। चैप्टर 1 में इनकम का, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में दिया है, वो अभी आपने नहीं पढ़ा है, वो अपन एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे वो। हाँ, वो छोड़ के बाकी सब आप पढ़ सकते हो, वो मुझे बता दें, ठीक है, समझे। तो अभी आपका इसका टेस्ट रहेगा, अच्छे से इज्जत से पढ़ो, नोट्स बना लो, बार बार बोल रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स बनाओ। लास्ट डे एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने को नहीं होएगा, नहीं तो आप सोचो इतना सब पढ़ नहीं पाओगे, डीटी आईडीटी एक दिन में एग्जाम के पहले खत्म नहीं होगा। हैंड रिटन नोट्स बनाओ सब जन, ठीक है। रिकॉर्डेड लाइव वालों